मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ दीपक राज सोलंकी एंड आज मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग द लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ विंडोज़ 10, मतलब अगर आपने लैपटॉप खरीदा है तो नेचुरली उसमें लाइसेंस वर्जन ही आया होगा विंडोज़ 10 का. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिस्टम, देन माई सिस्टम इज़ हैविंग my system is having, sorry, not this one, sorry, this one. Yeah, array. Yeah. So my system is having I'm recording this with the Filmora. I'm recording this with Filmora 9 screen recorder. और Filmora 9 screen recorder की खासियत ये है कि अगर आप एक webcam shot भी ले रहे हैं, so you can easily move, you can see अगर कहीं पे अपना वीडियो the webcam, the face cam is in बीच में आ रहा है किसी चीज़ के, you can move it and you can keep it somewhere. So this is the best thing. Video editing के लिए Filmora is really a good option, but I try using Cyberlink Power Director, लेकिन उसका जो screen recording है ना, उसमें you cannot see the webcam and that's the biggest problem. That's why for screen recording I'm using this Filmora and this is the best option. I can give it to you. Okay, so like मेरे system में you have Windows 10 Home Single and I am the Windows Insider, तो शायद version 909 है. तो अगर आपके पास भी like if you are having Windows 10 original version for the laptop, तो आप अपना एक लॉगिन क्रिएट कीजिए आउटलुक का एंड देन गो टू द स्टोर. यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सॉफ्टवेयर है विच इज़ नोन एज MindMaple Pen. MindMaple Pen एक अभी भी लोग दिवाली मना रहे हैं. सो MindMapple Pen इज एन अमेजिंग सॉफ्टवेयर. इट्स एन अमेजिंग माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर. ये कैसे यूज़ किया था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ के स्टोर से आपको मिल रहा है बहुत ही कम दामों में. इट सेज हियर it is you save 660 rupees. So if I say what is the price of it, then the price is 164 rupees. Let me show you where. if I क्योंकि मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ इसलिए मुझे यहाँ दिखाएगा नहीं. It will show for me only launch. So मैं बाई एज अ गिफ्ट ऑप्शन में जाके आपको दिखाता हूँ हाउ मच इट कैन कॉस्ट इफ आई बाई इट एज अ गिफ्ट फॉर समवन. सो we need to wait. Yeah, so you see here it's 164 rupees. So like I can send a mail to someone and I can gift it to someone. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये MindMapple Pen सॉफ्टवेयर गिफ्ट करूं टू योर ईमेल आईडी, टू योर आउटलुक आईडी, तो आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं. कैसे? यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए. इट्स लाइक अ गिव अवे आई एम ट्राइंग टू डू. तो अगर आपका I'll see, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं एंड कमेंट करते हैं, एंड इफ़ यू गिव अ गुड रीज़न व्हाई यू वांट टू हैव दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम माय साइड एंड व्हाट यू विल बी डूइंग विद दिस, तो मैं आपका ईमेल आईडी यहाँ एंटर करके आई विल बी गिफ्टिंग यू. बट आई नीड जेन्युइन लाइक्स, जेन्युइन सब्सक्रिप्शंस एंड जेन्युइन कमेंट्स. अगर ये होते हैं तभी मैं आपका ईमेल आईडी यहाँ ऐड करके आई विल गिफ्ट एनी वन सब्सक्राइबर दिस MindMapple Pen. अच्छा, ओके. सो फिलहाल द प्राइस इज 164 रुपीज़. अगर आप मुझसे नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स, अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं, इट्स वेरी लेस प्राइस 164 रुपीज़ में. दैट्स वाई आई एम proposing it to you all. तो ओके, अब हम ओपन करते हैं MindMapple को एंड लेट मी शो व्हाट MindMapple इज ऑल अबाउट. इसे ओपन होने देते हैं. बाय द वे आई रियली लाइक दिस सॉफ्टवेयर अ लॉट. मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द रीज़न इट इज़ अमेजिंग. मैं इसका जो क्लासिक वर्जन था दैट आई वाज यूजिंग, क्लासिक वर्जन में इट इज़ एक्चुअली क्लासिक वर्जन इज़ अ फुल वर्जन. ये थोड़ा सा लिमिटेड है बट स्टिल दिस इज़ फाइन. ओके, विल क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. And let me say, okay, creating a YouTube channel. Okay, so I'll make a mind map about creating a YouTube channel. कोई भी हम इसमें से option select कर सकते हैं. Let me check out this one. Okay, and now you want to put a central topic. Double click करो, यहाँ पे लिखो YouTube channel. तो YouTube channel से related क्या क्या you want to have, you are mapping your mind actually. आपके माइंड में जो कुछ चलता है, you put it on a paper
दैट्स कॉल्ड माइंड मैपिंग। तो जब हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, उससे कनेक्टेड चीज़ें यू डू इट लाइक अ माइंड मैपिंग। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यूट्यूब, ओके यूट्यूब, तो सबसे पहले यूट्यूब के लिए क्या, सो वी नीड टू डिसाइड अ नेम, then we need to decide the category or the subject on what we want to make the YouTube channel. Then we need to decide the frequency of uploading the videos, and suppose if you decide it here, उसके बाद you write it, okay मैं once in a week I'll do this category. I'm going to do it on computer software आता है, softwares नहीं आता, software, and say I'll put a name as, okay, I'll put a name as my tech world. You need to check it on YouTube. So आप ये नाम proposal दे रहा है, and what else you need to do, अपने frequency कर ली, and then how you're going to promote. So you write how I will promote it. I'll put it like this, and okay, how will I promote it? I'll promote it through WhatsApp, and I'll promote it through Facebook. I'll promote it through Instagram. I'll promote it through mouth marketing to friends and relatives. Okay, ये हो गया. So you see, this is what I have created. तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इसे बनाया. So this is called mind maps. You know, these are the mind maps. जब हमें we want to do a brainstorming, जब हम कुछ decisions ले रहे हैं, हम लोग कुछ we are working on something, you have to put it on a paper. You have to write something. And when you write something, हमें कभी-कभी हमें पता नहीं होता है कि exactly what we are going to do. We are going to put it in a list form, or how we are going to write it. We don't. It's totally unorganized. So this is the way. This is the most unorganizingly organized way of putting the things on paper. And I use MindMaple a lot. You can use MindMaple, Mind Maps. This is called Mind Maps. The software is MindMaple. तो आप Mind Maps इस्तेमाल कर सकते हैं अपने YouTube के वीडियोस के, सब्जेक्ट्स के रिसर्च के लिए, अपने ब्लॉग्स के रिसर्च के लिए, अपने कॉलेज, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी स्कूल के एग्जाम्स की नोट्स प्रिपरेशन के लिए, एंड फॉर एनी पर्पस, फॉर होम ग्रॉसरी, फॉर होम प्लानिंग और फॉर बिजनेस प्लानिंग. आप हर किसी चीज़ के लिए यू कैन जस्ट you can explore the software a lot, and you can find out what you want to do. So this is one of the best software that I suggest to you all, क्योंकि मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा, and I have been using it for a long time. Since इसका प्राइस बहुत लो है, I am suggesting it to you all people कि 164 is not a big amount, and if you can afford, just go and buy it from the Microsoft store. You need to have an Outlook ID, the Microsoft ID, and once you have that, you can download the software now. So that's all. And इसके बाद there are many options. You can save it. You can huge options are there of customizing. Suppose आप इसका shape कुछ और चाहते हैं, you want an oval shape, you can do an oval shape. You want to put it in color or something, you can put it in some particular color like this. You can do all kind of formatting. You can print it, you can export as a Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint में आप इसे export कर सकते हैं. You can print it, you can share it in various forms. Let me check. You can you can directly share it like this. Okay, you can do, you can print it. You can print it in a PDF format, I suppose. Let me check. हम print करके देख लेते हैं. Okay, in a PDF format, and how it looks. Let's say the preview. Okay, so it looks like this. You change the orientation from portrait to landscape. Okay, like this. So yeah. So this is all you can do, and that's the MindMaple pen all about. There is a classic version too. I think that is somewhat उसमें export options नहीं है in the free version, but you can check that one. This one is, I prefer, it's a fast, lightweight and better.
MindMapper Classic में they have much advanced option, but you can start with this since इसका price बहुत कम है. I am proposing it to you all, and if you want that I want to do, and if you want that I should do a giveaway of this, then you know what you have to do. So thank you for now, and God bless you all.